Cerebral autoregulation. Easiest question can be asked in the 5 marks or 10 marks. This is the image from the Miller. You need to draw two axes, cerebral blood flow, and here is the mean arterial pressure. Start with the 0, 50, 100, 150, 200. Here write 25, 50, 75 and 100. As you know, normal cerebral blood flow is 45 to 55 ml per 100 gram per minute. So draw line like this. This is the cerebral autoregulated part, and this line should be aligned with exactly at 50. Now these 2 points of the straight line should align at 50 to 60 over here and approximately at 150 over here, this part. Now the another narrow range part somewhere here around the 100 narrow part, and like this. Okay, now depict this shadow. If you can depict this shadow, so this is the variation. This is the variation, that is 45 to 55 variation in plateau. Okay, now this variation यहाँ से लेके यहाँ तक, this is the variation in the lower limit, this is the variation in the upper limit. Okay, now integrated regulation of the cerebral vessels and the factors which controls the cerebral vessel, like the neurogenic, cardiovascular function, myogenic, neurovascular coupling and vascular reactivity, PaCO2, PaO2, metabolic activity, arterial BP, cardiac output. Now we will further discuss these things. Apart from this, you can further draw one more image if the 10 mark is question asked. Otherwise, for 5 mark, this one image is enough. For 10 marks, you add these images. This is PSCO2 part and cerebral blood flow. As you know, the PSCO2 concentration of the PSCO2 rises, the cerebral blood flow will rise. It is as simple as that. In another part, for the hypercapnia, normocapnia and hypocapnia. If the patient is normocapnic, your autoregulation is being preserved. If the patient is hypercapnic, your autoregulation part impairs and your cerebral blood flow will be higher. In hypocapnic part, cerebral blood flow will be lower. It's as simple as that. Now, we will discuss only 3 part. One another thing, PaO2, oxygen concentration, oxygen saturation. As oxygen saturation or as PaO2 increases, like 50, 100, 150, 200 PaO2, the cerebral blood flow will fall. This is reverse of the carbon dioxide. As this is auto saturation, there is a linear relationship with auto saturation. As oxygen saturation will increase, the cerebral blood flow will decrease. So in hypoxia, this is the hypoxic part. This is hypoxic part. Your cerebral blood flow will be higher. So in CNS case, you avoid hypoxia, and you avoid hypercarbia. Because in that case your cerebral blood flow will be higher. So this thing you need to mention. Now 3 points you discuss over here. One is the neurogenic hypothesis, one is the myogenic hypothesis, and the flow metabolism coupling. Only these 3 points if you discuss, your question will be done. It is very simple. For neurogenic hypothesis, there is autonomic nervous system, intracranial sympathetic and parasympathetic systems that will work. The sympathetic system, you all know, sympathetic system will do the vasoconstriction and will increase the BP. Parasympathetic system will decrease the BP and do the vasodilation. Now this both thing, vasoconstriction and increase the BP, this both will
eliminate each other's effect. Like the BP is higher and there is a vasoconstriction. Ultimately, the increase the BP, which tends to cause increase the blood flow, will be reduced by the vasoconstriction on its own. So, the sympathetic system on its own regulates the cerebral blood flow. Similarly, parasympathetic system fall in the BP causes the vasodilation of the cerebral arterioles, which increases the cerebral blood flow, and decrease the BP decreases the cerebral blood flow. Ultimately, your cerebral blood flow is maintained. So it is on its own, autonomic nervous system maintains, causes the cerebral autoregulation. This is the neurogenic hypothesis. Now myogenic hypothesis, the arterioles and the vascular smooth muscles. Now this is the arterioles and there are the vascular smooth muscles in the arterioles. This smooth muscle causes the effect. What effect? How this smooth muscle behaves? Now in case of the increase the BP, there is a vascular smooth muscle will contract and decrease the BP. So जब भी बीपी बढ़ता है जब भी बीपी बढ़ता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए, बट उसको कम करने के लिए जो वास्कुलर स्मूथ मसल है वो उल्टा काम करता है. बीपी बढ़ता है तब वास्कुलर स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो को कम कर देता है. जब बीपी कम होता है तो स्मूथ मसल डायलेट कर जाते हैं एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. चीज़ वही है, जब बीपी बढ़ता है वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. यहाँ पे भी यही होता है, बीपी बढ़ता है, वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होता है. दिस इज द सेम इफेक्ट, बट दिस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल. इसको करते हैं बाइलीस इफेक्ट. एंड जब बीपी करता है तो डायलेट होता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो करता है. दोनों सेम चीज़ है, बट ये वास्कुलर स्मूथ मसल काम करता है, यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है. जो थर्ड चीज़ है वेरी इंटरेस्टिंग, फ्लो मेटाबॉलिज्म कपलिंग. ये लिखना ही लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वाइवा में भी पूछेंगे फ्लो मेटाबॉलिज्म कपलिंग क्या है. तो लोकल मेटाबॉलिक डिमांड. अब ब्रेन के टिश्यू में एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है. जब ब्रेन एक्टिविटी कब बढ़ता है, जैसे कि पेशेंट एंग्शियस है, एंग्जाइटी है, ब्रेन की सेल्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, टेंशन में हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में एंटर होने से पहले के 1 घंटे में या तो आप बहुत टेंशन में हो, या तो आपने किटामिन ले लिया है. In that case, your local metabolic demand will be very very high. Your metabolic products will be higher in the concentration. Your cerebral oxygen consumption will be higher. Increase the production of the carbon dioxide, एसिड्स, लैक्टेट, एडिनोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब मिलके क्या करेंगे, विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड, वाजोएक्टिव पेप्टाइड्स, एंडोथेलिन्स, ये सब मिलके वाजो डायलेशन करेंगे एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे एंड योर cerebral blood flow will be maintained. So ये आपका क्वेश्चन हो गया, cerebral auto regulation. You draw this image and 3 पॉइंट डिस्कस करो, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, flow metabolism coupling. Your question is done.